So we are going to study Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle in the context of, if you remember, we said that two commuting. So we took two variables, two commuting observables can, in principle, be measured with precision. या rather हम कहेंगे the more precise word is with the infinite precision, means तभी तो वो ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे, जैसे ए और बी है ना, that's why it's there. If their commutator is zero, they can be measured with precision, and they can be measured precisely in a simultaneous fashion, simultaneously. But अब अगर हमारे पास जो ये दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं, A and B, which are Hermitian operators, and then they do not commute. So what does it mean? It means that A and B cannot be defined sharply or precisely. Precisely हमने कहा था कि हम infinite precision जो हमारा था. So there is some element of उसी को हम uncertainty or inadequacy of measuring two simultaneous observables via those operators with exact precision. So this statement of Heisenberg's uncertainty principle can be understood in the context of those commuting operators and how we can measure them. And even if we measure them, can we measure them precisely? Can we measure them precisely with 100% precision or not? If they cannot measure them with that precise sense, with absolute precision, so that is the quantitative or qualitative statement of uncertainty principle. अब इसको हम कैसे कहेंगे? If they do not, so AB जो हमारे पास है, it's AB minus BA. So we will not say it's zero. For example, we will say, for example, AB minus BA is some iota C, where C is some Hermitian operator, ठीक है? So मान ली, ठीक है? So they will not commute. AB minus B is not equal to C. We will say it's iota C. We will assume it's like that. अब हमारे पास एक्सरसाइज बनती है, एक एक्सरसाइज है which you see in the book, exercise 10.7. Prove that C is a Hermitian operator. हाँ, ठीक है. So if you assume that AB minus B is not equal to C, it's this. We have to prove it as an exercise. It's other way around. The way we formulate an uncertainty principle in your earlier classes है ना, PQ minus QP is equal to iota H cross है ना, ऐसे ही कुछ, if you remember. So before we are coming to that, we are going to state जो uncertainty या variance हम define करेंगे. We are going to थोड़ा सा rehash करेंगे हम how we define probability, how we define variance and mean. So हम for example अगर हमारे पास दो observables हैं delta A delta B, तो variance को हम ऐसे define करेंगे, A minus A of square is basically this is square of the mean minus mean of the square. और इसी की तरह अगर दो ऑब्जर्वेबल्स हैं डेल्टा ए बी, तो डेल्टा बी के लिए भी हम we are going to define it, b minus b a is square of the mean minus mean of the, so even though जो b's है ना, they can be different random variables, एक दो तीन, फिर उनका स्क्वायर एवरेज जो भी है, from that we can arrive at expectation value. उस expectation value को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Between integral of x, whatever that is. अब यहाँ से अगर हमने डेल्टा ए स्क्वायर और डेल्टा बी स्क्वायर को ऐसे डिफाइन किया, तो we have to see डेल्टा ए
यहाँ से डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी स्क्वायर will be equivalent to greater than or equivalent to 1/4 c square. Iota Cn. So this is the thing. Yeah, rather it's SE 1/2 c square. और डेल्टा ए अगर इसका रूट करेंगे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी will be greater than or equivalent to 1/2 c. So we have to see how we can just see this statement uncertain delta a into delta b को हम can we write it like this or not. Then we are going to जो ये दो variables हैं we are going to treat them as operators which are going to be substituted by measurables, दो measurables, quantum mechanical measurables. And if दो quantum mechanical measurables they come out to be zero, then that means commutator is zero. If there is some positive constant, so this is the identity we have to prove. So we are going to start with this definition of delta A, variances का A and delta B का ऐसे. Now we are coming to back how we define psi A and psi B. Psi A wave function state A की wave function psi A को हम ऐसे define करेंगे. It's like या पहले हम करेंगे डेल्टा ए को in terms of psi A and psi B define. So delta A will come out to be delta A square will be A minus delta A, A minus this expectation value of A into psi A minus A into psi. ये है ना इनर प्रोडक्ट एक का A minus this mean of the expectation. This is inner product of this. वहां से आएगा delta A square है ना. That will come out to be A square, A minus A square है ना. Psi star. ये A दो बार है ना A minus. So you can also write it like this. A minus A delta into this का inner product. In the same way you can write it for the B variable also. So it's B minus B into psi minus B minus B into psi. इसका inner product. Fine. Now we are going to apply Schwarz inequality. If you remember Schwarz inequality हमारे पास आई थी psi psi A into psi B A psi B is greater than equal to psi A psi B. ये इसकी एक फॉर्म है. दूसरी फॉर्म है ये कि psi A psi A into psi B psi B is greater than psi A psi B whole square. ठीक है. So where ये जो डेल्टा A को हमने in terms of size, so inner product ये this is equivalent to this. इसका inner product is equivalent to this. But we have only introduced wave function psi or state psi. So अगर हमारे पास ये Schwarz inequality को यूज करेंगे psi जो inner product of psi A psi B is always greater than this psi A psi B. ठीक है. This is psi A psi A. This is psi A, but this is here psi A psi B. So it's either equal to or greater than this thing. The sum of two sides of the triangle may be greater than or always greater than the third side. You can see it that way. Now, what we are going to do is so what we are going to do is here psi so अब ये है कि we have to have one condition. The equality sign should hold that B minus B of psi. So we are going to impose a certain equality condition. It will hold only if it's equal to lambda A minus A of
psi. ठीक है. So why we are imposing this equality condition? You just थोड़ा सा सब्र करो, just see it. Now we are going to simplify this identity. Identity कौन हमारे पास है? तो हमारे पास a minus modulus of a into b minus, ठीक है. तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन करो. बट यू कैन, इफ यू रिमेंबर, हमने एक एक्सरसाइज की थी, यू कैन राइट एनी ऑपरेटर एज हर्मिटियन ऑपरेटर एज लाइक दिस, a plus a dagger by 2 plus iota a minus a dagger by 2, or this was h1 plus iota h2. You can write any operator a in terms of इसका a plus a conjugate or a minus, आप इसको ऐड करके देखो, इट विल कम बैक टू ए. तो इस चीज को हम यहां पर अप्लाई करेंगे. सो वी आर गोइंग टू राइट वी आर गोइंग टू राइट हियर सो वी आर गोइंग टू राइट, सो फॉर योर थिंग हम वी आर ट्राइंग टू सी जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, हमने कल कहा था कि साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल्स वी कैन मेजर देम, उसका कम्यूटेटर जीरो है. इफ द कम्यूटेटर इज नॉट जीरो, इफ कम आउट टू बी सम कांस्टेंट या कुछ, सो वी कैन नॉट साइमल्टेनियसली मेजर थिंग्स. सो वी विल हैव दिस आइडेंटिटी डेल्टा ए डेल्टा बी इज ग्रेटर देन दिस थिंग, एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दिस आइडेंटिटी. अब ये वाली जो है एनी ऑपरेटर कैन बी रिटन एज दिस a plus a. तो इसको हम यहाँ यूज करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन. ये है ना मीन एंड दो ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल्स, a माइनस दिस b माइनस a को हमने ऐसे डिफाइन किया था ना, a इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a, इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ b. दैट्स फाइन. So you can write it as, if you want to write it in terms of this sum of so iski up, you can also write it as a minus a, b minus b plus b minus b of a minus a divided by 2 प्लस आयोटा h2 के बदले हम इसको लिखेंगे आयोटा by 2 कॉम्प्लेक्स नंबर. So if you use it, so you can write this thing. If you want to write it this thing, you can also write it as this. So if you write this whole thing, वो हम ऐसे लिखेंगे, इस सब यहाँ से यहाँ तक इसको हम लिखेंगे f plus iota by 2. For example, we'll write it like that. Now what does it mean? It means that we are coming back. जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स हैं डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, हमको बेसिकली क्या निकालना है, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी स्क्वायर, है ना, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. ये हुआ है टू शो इट इक्वल टू दिस आइडेंटिटी. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग बैक टू डेल्टा ए इंटू डेल्टा, बट हमारे पास यहाँ डेल्टा ए स्क्वायर एंड डेल्टा बी स्क्वायर है. सो वी कैन राइट इट एज डेल्टा ए स्क्वायर, बट डेल्टा ए को हमने इसका ऐसे डिफाइन किया है ना, a माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए, एंड दिस इज b माइनस डेल्टा बी, दिस इज b माइनस डेल्टा बी, है ना. बट सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन डेल्टा ए स्क्वायर एंड डेल्टा बी स्क्वायर, डेल्टा बी स्क्वायर, so it's basically equivalent to right hand side, this term plus this term. So you can, if you square both square manual, we can say it's greater than or equivalent to इसका f square, since it's f plus iota by c2, f plus c by 2, तो इसका भी स्क्वायर आएगा प्लस 1/4, आयोटा स्क्वायर आएगा -1, वही 1/4 आएगा, ये c स्क्वायर आएगा. Since it's greater than or equivalent to, you can accordingly see इसमें जो other terms आए हैं, you can neglect them. ठीक है, ये है ना, roughly it's like this. So we have written two observables, delta A and
डेल्टा बी को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ समथिंग केम आउट टू बी एंड सम कंजुगेट सी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है? सो विच प्रूव्स द थ्योरम 10.53। हमारी थ्योरम कौन सी थी? 10.53 10.53 थी। हाँ, दिस चीज का, हाँ, दिस वाज द थ्योरम 10.53 of the book, or we can write it, चलो 3 हम इसमें इक्वेशन रखते हैं। तो you can see for commutative operators delta A delta B comes out to be 0. So this means we can measure two observables with absolute precision. But here it is not 0, it comes out to be delta C कुछ, ठीक है? So this is the thing we have to prove. So if we define the inner product of operators this way, delta A को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, delta B की वेरिएंस को ऐसे डिफाइन करेंगे, इसका इनर प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे, शिवाज कंडीशन को इंपोज करेंगे, फिर इनका इनर प्रोडक्ट लेके लेंगे, ठीक है? So it came out to be this. So if from this you can say, you can impose now, if f को हम 0 के बराबर रखेंगे, so this means that, this means what? This means delta A into delta B, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर उस साइड भी करो तो इट विल बी, ये स्क्वायर इसके काट जाएगा तो 1/2 C आएगा। So such a state obeys the condition 56 and 58. 56 हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? हाँ, जो मैं कह रहा था आपको, I said it, इसको आप याद रखो फिर। 56 6 and 58 58 कौन सी है? हाँ, so we impose this condition, so we got about uncertainty principle, ये कंडीशन हमने कहा था मान लिया, ठीक है? We did not give justification here. So if we impose these conditions, if you want to prove this identity, we can use Schwarz identity and this way of defining B minus expectation value with इसका lambda के हिसाब से, we multiply in terms of lambda, B को हमने ऐसे define किया, then we can arrive at this condition, that's it. And now we can impose, अगर हम we are coming back to our how we define inner product of this thing, psi of A minus modulus of A B minus इसका expectation value. So you can define it as lambda times डेल्टा ई स्क्वायर, हाँ, लैम्डा टाइम्स, हाँ, यहाँ पर ये है ना लैम्डा, हाँ। सो इनका इनर प्रोडक्ट है ना, नॉट भी साई है ना, ये फॉर एग्जाम्पल साई ऑफ ए इंटू ए माइनस साई, दिस इज इक्वल टू बी माइनस बी साई, इसके बराबर है, तो इसका लैम्डा इनर प्रोडक्ट आएगा। जैसे इसके बदले आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, बी के बदले आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, ये आएगा ना साई ए माइनस ए साई, ए माइनस ए साई आएगा, ये वहां से साई स्क्वायर आएगा, ठीक है? मतलब लैम्डा बाहर है तो लैम्डा बाहर आएगा, ये डेल्टा ई स्क्वायर आएगा, सिंस दिस एंटायर थिंग इज डिफाइंड, एंड डेल्टा ई इज डिफाइंड एज लाइक दिस, डेल्टा ए इज डिफाइंड एज ए माइनस डेल्टा ए, समझ आया? बेसिकली दिस इज इनर प्रोडक्ट, इस तरह कर देंगे इनर प्रोडक्ट साई साई का इनर प्रोडक्ट क्या है? साई स्क्वायर है कि नहीं? इन द सेम वे इट्स दिस इज साई ऑफ ए माइनस इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, बट हियर वी हैव इंपोज्ड दिस कंडीशन, सो इसके बदले आप ये लिखोगे, सो इट्स अगेन इट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए स्क्वायर, सिंस दिस इज स्केलर विल कम आउट, दिस इज लैम्डा ए। इन द सेम वे वी कैन राइट, अगर आप फ्लिप करो बी की जगह ए को, वी आर गोइंग टू राइट इट एज साई ऑफ बी माइनस B of A minus A of psi is equal to, since ये है ना लैम्डा, अगर आप A के बदले इसके लिखोगे तो B को in terms of A लिखोगे तो ये 1 by लैम्डा नीचे आएगा, ये 1 by लैम्डा नीचे आएगा for this, so it will be 1 by
lambda delta b square. Now what we can do is अब हमारे पास we can add and subtract. We can further do two operations, add and subtract. Once we add and subtract, एक में हमारे पास आएगा lambda times delta a square plus 1 by lambda times delta b square is equal to 0. And if we subtract this lambda times delta a square minus 1 by lambda delta b square, तो दूसरे में आएगा iota c. आप ये क्वेश्चन है कि सो दिस आप ये थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज करो घर पर, ठीक है, इट्स ए होमवर्क प्रॉब्लम. सो यू नीड टू हैव एक पेज का रफ थोड़ा सा घर पर बैठना है ना. तो फ्रॉम दिस सो इसका लॉजिक यहीं पर है. सो हाउ वी कैन रीअरेंज द टू, ये इसको वापस लिखेंगे इन द फॉर एंड हाउ वी कैन राइट इट दिस. फर्दर इफ यू सिंप्लीफाई इट, इसको आप ऐड करो एक बार एंड so we only want to get now lambda. So if you subtract both sides से plus आएगा, ये cancel हो जाएगा. So lambda can be written as ये iota c ऊपर आ जाएगा, iota c by 2 delta a. Now we are coming back to where we started. Now lambda a, let a, since a हमारे पास we started with a and b. They were two simultaneous observables, or we can also relate them with some commuting operators. ठीक है, commuting operators a b normally हमने कल कहा था, है ना, if they are zero, this means we can simultaneously measure them with precision. But हमारे क्लास में, आज की क्लास में what we did, a delta a into delta b, हमने a b नहीं, हमने variance of a and b निकाला. तो a को हमने ऐसे डिफाइन किया, डेल्टा a को हमने ऐसे डिफाइन किया, a माइनस वेरिएंस ऑफ e. इसको वेरिएंस को हमने डिफाइन किया स्क्वायर ऑफ द मीन माइनस मीन ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, कमिंग टू दैट. सो इफ बट ये a ही है बेसिकली, टू कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स. सो इफ इट्स नॉट जीरो, इट इज दिस बाय दिस. तो इट मींस अगर हमारे पास दो कम्यूटिंग वेरिएबल्स नहीं है, हमारे पास क्या है, now we can substitute them with let a be x position and b be px. ठीक है, हम अगर यूजर लैंग्वेज जो आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कैसे स्टेट करते हैं ना, पोजीशन मोमेंटम है ना, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, पोजीशन मोमेंटम एनर्जी. सो वी आर गोइंग टू जो वेरिएबल्स है ना a एंड b को हम रिप्लेस करेंगे. x is position, this is momentum. So we can write this thing. So x px and c को हम करेंगे hi के साथ. c हमारे पास c is equal to hi के साथ डिनोट करेंगे. So if you do this way, then जो हमारे पास इक्वेशन है x p x माइनस p x x, it will not be zero, it will be iota h I. Or if we want to write this as x and px in terms of delta x and delta p, then delta x and delta px, it's greater than or equal to h by 2. So so this is the way we normally in your earlier classes state of किसको uncertainty relationship को state करते हैं. There we don't say it in the language of these commuting operators and non-commuting observables. So here we use this exercise of पहले इसका
एक्स एंड पी या ए बी को हमने इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस लिखा, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स इक्वल टू दिस विद दिस। अब यहां पर हमने मान लिया, फिर हमने श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यूज की एंड वो वाली कंडीशन को इंपोज किया एंड देन वी कुड जस्टिफाई दिस कंडीशन, ठीक है। फर्दर व्हाट वी डिड इट, इसको फर्दर इसका इनर प्रोडक्ट लिया एंड इम्पोजिंग दीज कंडीशंस वी कुड अराइव एट, फिर यहाँ पर जो लैम्डा है ना, इट्स अ कांस्टेंट व्हिच नॉर्मली वुड टेक 0 फॉर कम्यूटेटिव ऑब्जर्वेबल्स। सो हम रिपैरामीटराइज करेंगे, सी को हम एच आई के साथ कहेंगे, वी कैन राइट दिस कम्यूटेटर ऑफ दीज टू थिंग्स इज नॉट 0 बट इट कम्स आउट टू बी सम कांस्टेंट टाइम्स आयोटा, ठीक है। सो दिस जस्टिफाइज हाउ वी कैन qualitatively state uncertainty relation, ठीक है। सो दैट्स इट। या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को हम इक्वल टू 1/2h। Now again at the end the equation for psi x can be defined as so h psi is equal to e psi है ना। So position operator versus momentum operator है ना, ऐसे h by iota d by dx, ex you can also write it as psi left hand side राइट हैंड साइड ऐसे। सो आई रेकमेंड यू, आप एक काम करना, यहां पर है ना, यहां पर यू गो टू द बुक, देयर इज अ चार्ट हियर हाउ देयर आर पोजीशन, देखोगे पोजीशन वेरिएबल, ऑपरेटर, मोमेंटम वेरिएबल एंड मोमेंटम एनर्जी, आई कैन से उसका एनर्जी corresponding operator क्या है, such that we get those eigenvalues. So at the end, if we want to write it in terms of this thing, you can write it as xp minus px, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या जो टोटल वेव फंक्शन psi है, psi का इसका evolution in space time, हम जो वेव पैकेट है which evolves in space, which evolves in, अल्टीमेटली वही है ना, वो जो वेव पैकेट हमारे पास है जिसकी सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैं, विच इज उसका एवोल्यूशन हम देखते हैं ऐसे, साई ऑफ एक्स, साई मीन्स एवोल्यूशन इन स्पेस एंड टी मीन्स टाइम। उस हिसाब से टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट फॉर एवोल्यूशन। बट हमने कहा कि फॉर कम्यूटिंग, जो क्वांटम मैकेनिक्स ऑब्जर्व्स दिस कम्यूटेशन रिलेशनशिप, ठीक है, तो वी कैन साइमल्टेनियसली प्रिसिशन के साथ हम वेरिएबल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मगर अगर हमने कहा कि इट्स नॉट इक्वल टू 0, इट्स इक्वल टू सम आयोटा टाइम सम कांस्टेंट, सो एब्सोल्यूट प्रिसिशन इज नॉट पॉसिबल। अब किस रेंज में हमारा जो अनसर्टेनिटी है ना, हम कितना उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। हमको कोई चीज नहीं पता है एग्जैक्टली, मगर कितना एग्जैक्टली नहीं पता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये प्रॉब्लम नहीं थी। क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्टली गिवन अ पार्टिकल, गिवन अ फोर्स, गिवन अ मास, यू कैन एग्जैक्टली नो पार्टिकल 5 मिनट के बाद कहाँ होगा, साल के बाद कहाँ होगा। तो यहाँ यू हैव टू ऑपरेट जो डायनेमिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, स्टेट क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की, यू हैव टू ऑपरेट विद इन सम अनसर्टेनिटी। अब कितना अनसर्टेनिटी है, सो दैट इज गिवन बाय एट द एंड जो अनसर्टेनिटी ऑफ वेव पैकेट है हमारे पास, it comes out to be like this, exponential of, this is a wave packet, x minus h, ठीक है। इसको कहते हैं मिनिमम अनसर्टेनिटी वेव पैकेट एंड इट रिप्रेजेंट्स प्लेन मॉड्यूलेटेड बाय गॉसियन एम्पलीट्यूड फंक्शन। ये गॉसियन एम्पलीट्यूड अर्लियर क्लास हमने कहा था ना, वो गॉसियन ऐसे वेव पैकेट कैसे इवॉल्व करता है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होगा, फिर मिनिमम कहाँ होगा, फिर मैक्सिमम मिनिमम,
अकॉर्डिंग टू दोज जब साइन हम इन टर्म्स ऑफ परमिशन कंजुगेट हमने वो एक्सपेंशन किया होता. So for simplest cases, this is the way evolution of that wave packet within the way we define within the modulo of uncertainty. अगर exactly नहीं define करेंगे कितना inexactly define करेंगे. That is given by this evolution of wave function psi. This जो हमारे पास है ना ये exponential ये Gaussian wave packet. अब ये Gaussian function को आप देखो कैसे mathematically how can plot it. तो आप सिंपल करते हैं ना इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे पार्टिकल मूव यूनिफॉर्मली 1 सेकंड में 1 मीटर आएगा 2 सेकंड में 2 मीटर, ये कैसे चलेगा along this. अगर या इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा ऐसे दो वेरिएबल्स x एंड y है दे आर ऐसे, तो डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट ट्रेजेक्टरी होती है. अब वो ये गॉसियन वेव फंक्शन है ना मैथमेटिकल फंक्शन, उसकी ट्रेजेक्टरी यू कैलकुलेट इट ऑन द. सो वही कहते हैं जो हमारा ये है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट हैज सम उसका वेव पैकेट का फॉर्म है गॉसियन पैकेट. बेसिकली इसका ये है कि x माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना यहाँ से ऐसे, इसका मीन ऑफ द स्क्वायर x माइनस स्क्वायर ऑफ द एवरेज माइनस मीन ऑफ द स्क्वायर, उसको आप प्लॉट करो विल बी सॉर्ट ऑफ गॉसियन वेव पैकेट. तो दिस इज गिवन बाय दिस थिंग. ठीक है, अब ये एग्जैक्टली ये कैसे आता है, ठीक है, दिस इज अनदर थिंग. ठीक है, वी कैन सी इट हाउ वी डिफाइन पोजीशन ऑपरेटर्स, हाउ वी डिफाइन मोमेंटम ऑपरेटर्स एंड हाउ दे आर एक्टिंग ऑन x px x, इसको सब देखो सी. ठीक है, सो दिस इज टुडेज थिंग. बात तो वही है, बात है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मीन्स या इसमें बहुत सारा दूसरा डिबेट भी आ रहा है कि इफ द वर्ल्ड इज अनसर्टेन, क्या ये अक्स कर सकते हैं, या बहुत सारे डिबेट्स. क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कहते हैं अक्सर दैट वर्ल्ड इज डिटरमिनिस्टिक, सुना है ना, हम कहते हैं ना डिटरमिनिस्टिक फिजिक्स. यू कैन डिटरमाइन थिंग्स, इक्वेशन ऑफ मोशन. डिटरमिनिस्टिक किस हद तक, जैसे लैप्लास ने कहा था गिवन मी इनिशियल कंडीशंस, मैं कहूँगा आपको यूनिवर्स कहाँ. जो 17वीं सेंचुरी में प्लैनेट्स कहाँ थे,